हेलो हेलो सर। अक्षरा, हाँ। वर्कशीट हो गया तेरा? नहीं हुआ। कितना बाकी है? बस अभी नहीं हुआ है मेरा। तो मेरा भी नहीं हुआ है। बातें बंद करो। हेलो, हेलो सर, आवाज येतो ना? हो, येतो येतो. Okay, now sharing the screen. सर स्क्रीन दिसते? हेलो हेलो सर, is screen is visible? Okay, so today we will start with the our next topic of our next fourth lesson, that is operation on rational numbers. Okay, operation on rational numbers. We will see the next topic, decimal form of a rational numbers. Okay, how to make a decimal form of the given rational number. We will see that. We will solve few examples, then you will get full idea about it, how to solve it. Okay. Now we will solve for example. Now see how this is solved. This is solved example. This is solved example is given. That is write the rational number 7 upon 4 in the decimal form. Okay. 7 upon 4 is a rational number, and that we have to write in a decimal form. So see how to solve. Okay, I need a vertical screen so everybody should be able to see. Okay, 7 upon 4 we have to solve up to into decimal form. Okay, so we will start with writing, convert it into division form first. Okay, so 7 upon 4 means 7 divided by 4. That we have to do. Then we have to find out answer. Okay, so 7 is here numerator, 4 is denominator. Okay, now we have to write it in division form, in that is a vertical method. Okay, so 7 upon 4 means 7 is divisible by 4. So in so 4, so 7 we have to write it as a dividend. Okay, and 4 we have to write it as a divisor. Okay, the denominator we have to write at denominator we have to write as a divisor, and the numerator we have to write as a dividend. Then we have to then we can start it dividing it. Okay, so for say 4 time table we have to use. So 7 is bigger than 4. Okay, so we can divide it. Say 4 1 is 4, 4 2 is 8. Okay,
write a table. I'm writing table here. 4 1 are 4, 4 2 are 8. Okay, so 8 is bigger than 7, so we will take 4. Okay, 4 1s are 4. So 4 1s are 4. Okay, 4 minus from 7. Okay, 4 1s are 4. So 1 is a multiplicand. 1 is a multiplier. So we will write as a dividend. Quotient. And then minus 8. 7 minus 4. 7 minus 4 is equal to 3. So minus it right here 3. Now again we have to divide 3 by divide 3 using 4. So 4 is 3 is smaller than 4. So we have to uh, give one dot here after 7 because it is smaller number, so we cannot divide it now, and we have to convert it into decimal form. Okay, so after 7 give one dot, and after 1 also give one dot. Okay, and we can write 0 here. Okay, then bring that 0 down here. Now it is 30. Now we can divide it. Understand? As 3 is smaller than the divisor, 3 is smaller than divisor, then we have to put one dot, one decimal point after 7 and write 0 after that, and also put one decimal point after 1 because it is smaller number. 3 is smaller number, so if after 7 we have put put 0 here, so after 1 quotient we have also put 0. Okay, then find out 30 in the table of 4. Then write expand the table up to 30 or more. 4 to the 8, 12, 16, 20, 24, 28. Okay, it is 24. It is looking at 29, 28, then 32. Okay, 32 is bigger than 30, so we will now consider 28. Okay, now count how much it is. 1 2 3 4 5 6 7. 4 sevens are 28. Okay, so 4 sevens are right here 7 as quotient because 4 sevens are 28. So right here 7 after 0.7, and 4 sevens are 28. So 28 minus from it. Okay, then minus. Okay, then 30 minus 28. 30 में से 28 minus करो. 30 minus 28 how much? 2. Okay, again 2 is remaining. We have to find it up to it is coming 0. Okay, 0 आने तक करना है, तो तब तक करो solve. Okay, so 0 is there. Then again it is smaller, so again take 1 0 here. Again take 1 0. Okay, after decimal point 2 zeros are there, and then bring that 0 down to make it bigger, so we can able to solve it. Now it is 20. So 20 is there in the table. Okay, we have got full number. 1 2 3 4 5. Okay, 4 5s are 20. So right here 5, 4 5s are 20 minus from 20. Okay, 20 minus 20 0. Okay, now we have got our final answer. Understand? We have got now final answer. So what answer we have got here? What is the decimal point of 7 upon 4? So 7 upon 4 is equal to, this is the answer, 1.75 is the answer. So write it here, 1.75. Okay, and when we have to put a decimal point, when the number is smaller than the divisor. Okay, the number to divide is smaller than the divisor, then we have to put decimal point. Okay, so here when there is a 30, then there is a 3, we have to divide, then we have put a decimal point. Okay, for quotient. Understand? So that way you can solve it. You can take screenshot of it. Now we will see the practice set about how to solve it.
practice by set 24 is there. Okay, write a write the following rational numbers in decimal form. See this one. Write the following numbers in decimal form. Okay, now we'll solve examples. Okay, if one of the if minus symbol is given, then quotient will come in minus. Okay, then we have to get negative. First we'll solve this. Okay, minus symbol is there, so you can understand it very well. So write the rational number of the decimal form. We will start. Second example, minus 7 upon 8. The minus 7 upon, write the example, minus 7 upon second example. We are solving. Minus 7 upon 8 we are solving. Okay, now write it in minus 7 upon 8. Okay, then write it in vertical method. Okay, so inside what we have to write and outside what we have to write, minus 7 upon 8 is there. Okay, now forgot the minus symbol. Only we will write positive numbers, and what we will get answer, that you have to consider. Okay, that you have to give it a negative, make it negative. Answer quotient will be negative. Okay, so minus 7 upon 8. So which number is dividing? 8 is dividing. Denominator is divisor here. Okay, and 7 minus 7 is there, so 7 will be here. Okay, 7 will be a dividend. So now you can start solving. Now 8 divided by 8 dividing 7. So 7 is smaller than. Okay, 7 is very smaller. Always put, we are writing decimal form, so put a dot after 7. Okay, and write 0 here, so we can easily brought that down for solving it. Okay, after point you can write as much as zeros. It will not change the value of the number. Okay, 7.000 means 7 only. Okay, so it is smaller number, so we can put the point symbol here. Okay, point symbol, and before that write 0 point dash dash. Okay, 0 point dash dash means it is easy to read. 0.12, 0.13. Okay, it is because it is less than 1. It is up to 0 point dash. Okay, so 7 is smaller than it. Okay, 7 is smaller than, so we have write 0 here. Then we can start. Now we will take a 70 number for finding the quotient. Okay, so 7 how much there? Set a table of 8, and I am writing a table. 8 ones are 8, 8 to the 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, and 80. I have written whole table, so it will be easy. Now say where is 70 number? 70 number is not there in table, is bigger number is there. 72 is there and 64 is there. So 72 we will not take because it is bigger than 70. So we will take 64 number. So 8 8s are right here 8 because 8 8s are 64, then minus 64 from it. So 70 minus 64, how much? 6. Right. So again 6 is 6 is less than 8. So we have to take 1 0 down.
Okay, now where the other 60 is there, so find out 60. Where is 60? 60 is not there in the table. 64 is there and 56 is there. So 64 is bigger than 8. So we will take 56. Okay. How much? 8. 8 sevens are how much? 8 sevens are 56. Okay. So right here 8 sevens are 56. Minus from it 60 minus 56. How much? 4. Okay. 60 minus 56. 56 from 56 counts up to 60. 56, 57, 58, 59, 60. Okay. So it is 4. Again 4 is smaller, so we will take it up 1 0 down. Now it is 40. The 40 is there in the table, right? 40 is there in the table, so we have to make it directly. 8 5s are 40. So right here 5, 8 5s are 40. So 40 minus from it because 8 5s are 40. So 40 minus 40 is 0. Okay, now we have got answer minus 7.8 is equal to, here minus symbol is there, so here also we have to get minus symbol. Okay, quotient will be minus. Okay, the quotient of negative and positive number is always negative. We have learned in second lecture. Okay, operation on rational multiplication and division of integers. In second lesson we have learned that. So quotient of negative and positive number is always negative. So right answer in negative is equal to minus 0.875. Okay, understand? So here quotient we will be getting 0. Then what if we are not getting quotient 0, again and again repeating, if again and again it is endless division. Endless means it is the remainder is not coming 0. Remaining is always coming 1, 2 or 3 or anything number. So we will see that in next example. Okay, now we will see the sixth example of practice set. See the sixth example. It is quite different, but same. It is the same process is there. Okay, the 4 upon 3. Okay, 4 upon 3 is there. Now who will tell me where to write the number? Raise your hand, those are interested. Khushbu Gupta, I'm unmuting you. Okay, stay unmuted Yes, and yes, sir. okay. Don't talk in between when I will ask you, then you can solve. Now we will six example. Sixth example is I am tick marking it 4 upon 3 is the sixth example. Okay. सर करना है. No, I will ask you where to write the number. Okay. So sixth example Yes. is there. 4 upon 3. Okay. Now tell me, Khushbu, where to write 4, where to write 3? 4 divided by 3. हाँ, पर 4 अंदर लिखना है, बाहर लिखना है? 4 बाहर. 4 बाहर. बाहर. अंदर लिखा मैंने तो. बराबर है कि नहीं? सर बाहर. बाहर कैसे आएगा? सर बड़ा नहीं, सॉरी. ऐसा नहीं, बड़ा नहीं, इसमें रैशनल नंबर है ना वो. यस सर. नीचे वाला नंबर होता है वो इधर बाहर वाले में लिखना होता है. ओके, उसको एज अ सर वो माइनस था इसके लिए. नहीं, ऐसा नहीं. जो नीचे वाला नंबर रहता है डिनोमिनेटर. यस. ये क्या है? ये 3 है, डिनोमिनेटर है, तो इसको हम किधर लिखेंगे? बाहर.
Okay, बाहर लिखेंगे. Yes, sir. And 4 is the numerator, so we will write it inside. Okay, Yes, sir. understand? 4/3 means 4 is divided by 3, 3. 4. ओके, जो नीचे वाला नंबर रहता है उसको उससे डिवाइड करना होता है, तो इसलिए वो बाहर रखते हैं. मीन उसका टेबल यूज करके हमें सॉल्व करना है. ओके, Yes, नाउ sir. 3 and here, so up to 4 you can write a table of 3. 3 1 are 3, 3 3, 2 are 1, 6. 3. So 3 1 are 3 we will take, because 4 is not in a table, and after Yes. that a bigger number than 4 is there. So 3, 1, 3 3. 1 are 3. 3. So 4 minus how much? 3 minus from 1. it now. 1. Okay, now 3 and 1. So 1 is smaller. Okay, Yes. so what we have to do? In the quotient we have to put decimal symbol, because it is smaller. And now we have to continue with the, here also we can take 0 0. Yes. Okay, and then we have written point, so we can brought 0 down. Now 0, 10 हो जाएगा, sir. Find out it. 3, 3 जा 9. Right, 3 is 9. 9. Okay, again 3, here write 3, 3 is 9. Again 1. minus 1. क्या आएगा, फिर से 0 लेना पड़ेगा. 10 हो फिर से जाएगा. 9, 3 जा 9. 3 is 1. 9, 1. फिर से वैसा ही हो जाएगा. फिर से 0 इधर से, एक 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं हम. ओके, तभी फिर से भी क्या सर किया, वही होएगा ना. तभी वही होगा. माइनस 3 is 9. फिर से 1 आया, फिर से लिया हमने, फिर से 10 लिया, फिर से फिर क्या 10 आएगा, आया, फिर 9 ले, फिर फिर से 1 आएगा. तो ऐसे ऐसे ही हमको करता रहना पड़ेगा. हम ऐसे किया तो ऐसे ही हमको करता, कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं होगा. ओके, तो ऐसा ऐसा तभी आएगा 2-3 बार, और 1 ही आता जाएगा. तो क्या वो, उसको क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं. एंड द रिकरिंग नंबर वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, सो हाउ टू राइट द आंसर ऑफ इट. अभी इतना, अभी आगे आगे करना नहीं है. ओके, क्योंकि इसका 1.3. वैसे ही पड़ जाएगा. तो we can write answer 4/3 is equal to, ये आंसर दिया 1 है. point. Okay, तो मतलब 1.3 और 3 फिर से आ रहा है. जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लिखना है, बार. मतलब उसके उसके ऊपर पॉइंट लिखना है. ओके, Yes, sir. 1.3 एंड उसके ऊपर पॉइंट 1.3 बार. उसको कैसे रीड करेंगे, 1.3 बार मीन्स 3 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मीन रिक्यूरिंग अगेन एंड रिक्यूरिंग. इट इज कॉल्ड एज अ रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म. ओके, Yes, sir. और पहले हमने देखा वो उसमें 0 रिमाइंडर आता था. 0 रिमाइंडर आता था, उसको क्या कहते थे हम, टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म. मतलब उसमें रिमाइंडर 0 आता था, ऐसा उसका मीनिंग है. ओके, देखिए मेरा. नॉट अ Sir. it is not it is recurring, and it is not terminating. And one Sir. number is 3 3 and 3 is coming already. Okay, what happened? सर बोल रही हूँ, एक बार थर्ड वाला बताओ ना. कौन सा, हाँ थर्ड वाला. ओके ओके, थर्ड एग्जांपल. ओके ओके, नाउ थर्ड वी आर सॉल्विंग थर्ड एग्जांपल. Yes, sir. और ये मीटिंग खत्म होने के बाद फिर से ज्वाइन नहीं होना है. ओके, we will remaining part we will see after tomorrow. Okay, now see the third सर इस वाला. बार मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगा तो ज्वाइन होना है. नहीं नहीं, मीटिंग टाइम हो गया ना अभी, 8:22 हो Yes, जाएगा. sir. हो जाएगा. ओके, तो फिर से सर ज्वाइन एक नहीं बार होना है. थर्ड वाला बता दो बस. Okay, third option is called as a improper fraction. Okay, improper fraction has 3 numbers. Out of them, one number is whole integer, and other 2 numbers are 7. Here 7 is the integer, 3 is the numerator, and 5 is the denominator. Okay, so what is the first step towards solving it is to convert it into proper fraction. पहले हमको इसको proper fraction में convert करना है और बाद में solve करना है. Okay, so I will Yes. solving it. Okay, 7 and 3/5. Okay, जो 5 दिया है और 7 दिया है उसका multiplication करना है.
7 मल्टीप्लाइड बाई 5 और उसके मल्टीप्लिकेशन में जो 3 बचा है उसको एडिशन करना है प्लस 3 और उसके नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा वो सेम रहेगा. 7 and 5 multiply and into plus 5 to it. So 7 multiplied by 5, 35 plus 3 upon 5. So 35 plus 3 how much? 38 upon 5. Okay, so 38 upon 5 is the proper fraction. Now we have to divide it. Okay, we have got it 38 upon 5. Okay, that fraction is 38 upon 5. So 5 is the here divisor. डिवाइजर भी हो उसको डिनोमिनेटर भी बोलते हैं एंड इट इज डिविडेंड. डिविडेंड मतलब जिस नंबर को डिवाइड करना है वो, और डिवाइजर मतलब जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड करना है वो. ओके, अभी 5 का टेबल यूज करेंगे क्योंकि 5 डिवाइजर है. जो डिवाइजर होता है उससे हम डिवाइड करते, उसके टेबल यूज करके डिवाइड करते हैं. ओके, सो 5 will come here and 38 will come here. Okay, now use the table of 5. 5 sevens are 35. Okay, and after 38 we can write point and 0 and 0 0 0. Only 1 2 3 0 you can write. Okay, then 5 7 are 35 minus 8. 8 minus 5 3. 3 minus 3 is 0. Now 3 is smaller than 8, so we will take 1 0 down to make it bigger. Okay, and here 5 6 are 30. if we are taking 0 extra 0 after point, then here we can also point. Here we have to also take point. Okay, Yes, then 30 is there in table. 5 6 are 30. 30. So 30 minus 30 is 0. So answer will be सर 30. 0 आ जाएगा तो रोक देने का ना. Yes, 0 आने का रोक देने का. और जब भी बार बार आ रहा है वो बार बार 3 4 बार आया नंबर तो उधर ही वो भी रोक देने का और उसको लिखने का आंसर. ओके, Yes. so 38 pi is equal to 7.6. ओके, अब ये इसका आंसर आ गया 7/3. 7 and 3/5 is equal to 7.6. ओके, दोनों का मीनिंग सेम है. 7.6 मतलब वही है, 38/5 भी वही है. ओके, फिर उसका सिर्फ फॉर्म चेंज हो गया है. ओके, पहले वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, अभी प्रॉपर फ्रैक्शन है और अभी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इसको क्या बोलते हैं हम? 7.6 लिखा है उसको डेसिमल फॉर्म. ओके, Yes sir. इसका मीनिंग ऐसा भी है 76/10. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 76/10 या 760/100. ओके, इसका मीनिंग सेम आएगा. ओके, पर हम उसका मीनिंग सेम है क्योंकि उसका वैल्यू भी सेम है. ओके, उसको हम सिंपलीफाई किया तो वो भी वही ऐसा ही आएगा 7.6. ओके, now we'll see the another example. Fifth example. Seven point 22. Sorry sir. 22/7. 22/7 is there. Okay, 22/7 is there, so we will convert it. It is already proper fraction is there, so no need to convert it. Write 7/22. Okay, जो नीचे का नंबर आएगा बाहर आएगा और ऊपर का नंबर अंदर आता है, उसको डिवाइड करना होता है. और जो नीचे का नंबर होता है उसका टेबल यूज करना होता है. जो जिसका टेबल यूज करना होता है उसको हमेशा बाहर लिखना है. ओके, so 7 table right. 7 to the 7, 7 to the 14, 7 to the 21. 7 3 are 21. Then after 22 put point and write 0 for taking afterwards. Okay, so 7 3 is 21. 21 minus 22 minus 21 1. Okay, now 1 is smaller than 7. 1 is smaller than 7, then we can take 0 from here, so it is 10. And then also 7 if 1 you the are- 7. no, first we have you have step forgot one step, that is if we are taking 0 from here you have to put point here also. Okay, क्योंकि हम पॉइंट के बाद का 0 ले रहे हैं इसलिए इधर भी पॉइंट देना जरूरी है. ओके, एक ही बार देना होता है, ऐसा बार बार देने की जरूरत नहीं. ओके, नाउ 10 is there
Where is 10? Not there. Okay. ये सर यहाँ पे 2 नंबर है इसके लिए ना। 7 1 7. Okay, minus it. 10 minus 7, 3. Okay, again 3 is smaller than 8. So 0 bring down 1 0. Then 30 is there. 30, find out the table of it. 7 5 7 Okay, 7 5 5 35 and 7 4 the 28. So 35 is bigger, so we will take 28. And what is number of it? 7 4 the 28. Okay, so 30 minus 28, how much? 2. 30 minus is 2. Okay, again bring down 1 0. It is so 20. Against 20, so again we have to find 7 out to 20. the 20 is not there. 21 is there, bigger. तो bigger number नहीं लेना है, छोटा number लेना है. तो 7 to 21 the छोटा number है. 14 7 to the 14. 14 minus 20 minus 14, how much? 6 6. 6 6, right. So right here 6. So bring down 1 0. ओके इधर कितना भी जीरो ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू सेम रहेगा. ओके सो इट इज 60. सो 60 कितना आएगा टेबल में? 35 7 and 7 at the 7 56 5 the 4 for side table. Okay, 7 4. sir So at it will the be 56 right. 7 1 14 21 35 35 out of 40 2 49 56. Okay, 63 50 after 56 63. Okay, 63 is bigger, so we will take 56. Okay, 7 8 is 56. So right here 8 7 8 is 56. Again is there 60 minus 4. Okay, तो 4 आएगा तो क्या होगा? फिर 0 लेने का. हाँ, again take 1 0, ऊपर से 0 लेने का है फिर से. ओके तो 40 के टेबल में नहीं है, 35 है. 7 5 is 7 5 35. Then minus 5 again 5 will come. Okay, so again write. Now again take 1 0 from it. Okay, it is 50 there. Okay, 50 is there, so what will come? 7 9 63 53. 50 है ना, 50 में कैसे आएगा वो? सर 10 7 7 जा 53. 7 7 जा 49. Okay, 53 नहीं आएगा. Okay, तो 50 minus 49. 50 minus 49 क्या आएगा? 1 आएगा. Okay, तो इधर भी 1 आया था, तभी ये इतना सारा हो गया, तो फिर से ऐसा ही आने वाले. ओके, इधर देखो 22 minus 21 किया था हमने, तभी इधर 1 आया था रिमाइंडर. तो 1 से अभी फिर से किया हमने, तो भी यही आने वाला है. तो इसका आंसर क्या होगा? 22/7 is equal to 3.142857. और यही नंबर अभी फिर से आने वाले हैं. अभी फिर से किया हमने, तो यही नंबर आने वाले, इसलिए उसको ऊपर पूरा लाइन मारने का बार. ओके, सो आंसर क्या आएगा? 3.142857 बार. ओके, सो दैट इज द आंसर. 3.142857 बार. ओके, अगर पूरा नंबर का सेट है वो फिर से आने वाला है, हमको पता चला. हम कैसे पता चला? क्योंकि इधर भी 1 रिमाइंडर है और इधर भी 1 रिमाइंडर आया था हमारा पहले ही इसमें. तो अगर फिर से किया हमने 10, इसका क्या होगा? 10 होगा, फिर से 7 होगा, तो फिर से 3 आएगा, फिर से उसमें 20 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 6 आएगा, और फिर से 1 आएगा. ऐसा ही साइकिल चालू रहेगा. इसलिए वो आंसर पे ऊपर वही रिपीट होने वाला है, इसका मतलब है. सर 1 या 0 उसके बाद नहीं करने का ना?
नहीं, अगर इधर देखो, हमने इधर 1 ने स्टार्ट किया था ना इधर। यस सर, अगर हाँ देखो, हाँ जिधर स्टार्ट किया है ना, हमको पता चला कि वो नंबर फिर से आया, वो नंबर उधर फिर से आया, तो वो स्टॉप करना है। तो इधर देखिए, इधर देखो, इधर भी 1 है, इधर देखो एरो दिखाया है, यस एरो इधर सर, भी 1 आया था और इधर भी 1 आया, तो उसका मतलब है कि वही फिर से रिपीट होने वाला है। फिर से बार बार किया तो हमने 100 टाइम की 100 बार भी किया तो भी वही आने वाला है। ओके, फिर से बार बार ये नंबर आएगा। तुम करके देखना वो कैसे, नोटबुक में करके देखना क्या आ रहा है, तो वही वही नंबर रिपीट आएगा, तो इसलिए हमको वही रखना है आंसर। जो नंबर रिपीट आने होने वाला है उसके वो सेट का वो नंबर के सेट के ऊपर लाइन मारना है। मतलब उसको कैसे रीड करेंगे, बार। लाइन को क्या रीड करेंगे, बार। 142857 बार। ओके, so 22/7 is equal to 3.142857 bar. Understand? Okay, I will send one video of it so you can be able to solve it. Okay, practice number 24. So we will understand in deep and you can solve any example. Okay. Now student can leave the lecture. It will be end in 5 minutes automatically. So remaining example you can solve on your own. Okay, try to solve it. But first solve the worksheets. Okay, यस सर, using the power of internet. इंटरनेट पे जो तुमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इंटरनेट पे गूगल पे टाइप करने का और तुमको उसका आंसर मिलेगा ऑटोमेटिक। ओके, तुमको वीडियो में उसका दिखेगा कौन सा कैसे सॉल्व करना है वो। बाय सर, गुड नाइट सर, बाय बाय। थैंक यू सर।